Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to discuss about two important topics which might seem interrelated, and this is quite important. Why? First, the two concepts that we are going to discuss today, these concepts shape our world and they matter a lot. And uh, we are going to discuss this in detail. First one is greenwashing. Students, what is greenwashing? Have you ever seen products labeled as eco-friendly or green? And you might have wondered, wow, this company really cares about the environment. Well, students, sometimes they might, but other times it's just an illusion. And this tactic of misleading consumers into thinking a product or company is more environmentally responsible than it actually is called greenwashing. तो ग्रीन वॉशिंग में हो क्या रहा है बेसिकली जब कुछ कंपनीज अपने आप को एनवायरमेंटली फ्रेंडली या सस्टेनेबल प्रेजेंट करती हैं, but in reality they are not making significant changes to help the planet. It's like wearing a green mask to appear eco conscious without actually being one. And uh, that's not right. Correct? क्योंकि ऐसे तो आप कंज्यूमर्स को ट्रिक कर रहे हो, राइट? क्योंकि लेट्स से आई go to a market and I want to buy products which are eco friendly. ओके, तो मैं एक प्रोडक्ट वो चूज करूंगी जो मुझे लगता है कि ये इको फ्रेंडली है और ये सस्टेनेबल है, बट इन रियलिटी वो प्रोडक्ट तो सस्टेनेबल है ही नहीं, इको फ्रेंडली है ही नहीं। तो एक तरीके से मुझे एज अ कंज्यूमर मिसलीड किया जा रहा है, राइट? और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अ कंपनी माइट एडवाइज that its products are made from recycled materials, but in truth only a tiny percentage of the product is recycled or the manufacturing process is still highly polluting. Then don't you think it's kind of committing a fraud? क्योंकि being an environmentally conscious consumer, I want to buy those products only जो environmental friendly हैं। और अगर कोई कंपनी फॉल्स क्लेम कर रही है, देन मैं जो एक स्टेप लेना चाह रही हूँ टुवर्ड्स एनवायरनमेंट के तरफ या फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ, वो मैं नहीं कर पाऊंगी, right? So in a world where consumers, including all of you, are becoming more environmentally aware, greenwashing is, you can say, it's an unethical practice to win trust, and it can mislead people into thinking they are making a positive impact on the environment when they might not be, right? तो ये चीज जो है वो काफी गलत है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपनीज use this tactic to appeal to consumers or customers who want to make sustainable choices. But these claims can be exaggerated or outright false. And to address this issue, the Indian government recently issued some guidelines. Okay? So some guidelines issue की गई है गवर्नमेंट ने टू बेसिकली क्रैक डाउन ऑन ग्रीन वॉशिंग। तो ये गाइडलाइंस क्या है? जैसे इस गाइडलाइंस एम कर रहे हैं कि कंपनीज अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी क्लेम कुछ वो बोल रहे हैं तो वो कितने उस पर खरे उतरे हैं। जैसे truthfulness and accuracy. Environmental claims should be based on verifiable information through certificates from authorities or internal evidence. And then generic terms जैसे green or clean should not be used without mentioning adequate and accurate data. अगर एडिक्वेट और एक्यूरेट डेटा नहीं है तो क्लीन और ग्रीन जैसे जेनेरिक टर्म्स नहीं यूज करना चाहिए, और इजी सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहिए फॉर एडवर्टीजमेंट, जिससे कंज्यूमर को क्लैरिटी मिले।
right? So basically, these guidelines aim to ensure that companies making sustainability claims follow through on them in reality. For example, they'll need to back their eco friendly labels with credible evidence, or they're gonna face penalties. And this is a big step forward because misleading consumers with false promises doesn't just hurt their trust, it also shows down real efforts to protect our planet. it कि हम जो रियल एफर्ट्स कुछ कंज्यूमर्स करना भी चाह रहे हैं, उनके एफर्ट्स को भी स्लो डाउन किया जाता है ऐसे फॉल्स क्लेम की वजह से. So if businesses are allowed to keep faking their environmental impact, it diverts attention from those that are genuinely trying to make a difference. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस इशू किया है. ओके जैसे कोई भी मिसलीडिंग एंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए. अगर कोई डेटा कोई भी वर्ड्स या की फ्रेजेस एडवर्टीजमेंट में मेंशन है तो उसको बैक करने के लिए एविडेंस शुड बी देयर. ओके जैसे claims that compare one product to another must be based on verifiable and relevant data. Okay, clean and green terms should not be used without mentioning accurate data. तो ये कुछ guidelines हैं. All right. Now, students, let's shift to our second major topic, which is food access is about equitable agri-food system. Right now, October 16 is celebrated as World Food Day, and this year's theme is Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Yes, here you can see October 16 is World Food Day with theme this year being Right to Foods for a Better Life and a Better Future. Now, students, this topic is deeply connected to the sustainability of our agricultural system. Okay, and in the first paragraph, in the first major paragraph, क्या बोल रहे हैं राइटर? बेसिकली इंडिया की जो जर्नी रही है टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी के इंडिया की क्या जर्नी रही है वो इस आर्टिकल में कहा गया है. जैसे फर्स्ट जो इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी सिचुएशन और इंडिया ने कैसे फूड सिक्योरिटी अचीव किया. सी डेकेड्स अगो इंडिया was facing severe food shortages especially after independence, and country was entirely dependent, most country was hugely dependent on food import matlab we were buying food from other countries. कैन यू इमेजिन हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हमारा सफिशिएंट ही नहीं हो पाता था. वी यूज टू बाय फूड ग्रेन्स और बहुत सारे फूड आइटम्स वी यूज टू बाय देम फ्रॉम अदर कंट्रीज. बट things began to change with the introduction of the green revolution in the 1960s. 1960s में एक गवर्नमेंट ने एक ह्यूज स्टेप लिया था जिसे इस इवेंट को क्या कहा गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन. And the green revolution brought high yield crop varieties, modern irrigation techniques, and chemical fertilizers. But this whole thing, it transformed India from a food deficient nation to one that could largely feed itself. मतलब एक तो पहले एक टाइम पर ऐसा था कि हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था. बट ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ और भी इनिशिएटिव्स के साथ इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया था एक फूड डेफिशिएंट नेशन से फूड सिक्योरिटी अचीव कर रही थी. और की पिलर और भी थे. ग्रीन रेवोल्यूशन था, साथ साथ एक और इनिशिएटिव जिसे कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013.
Basically, it provides food entitlements to over 800 million citizen. तो ऐसे कुछ स्टेप्स की वजह से इंडिया की जर्नी जो एक फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस कंट्री बन गई थी, राइट? And however, this journey, you can say this journey has been uh, far from smooth. Why? Because despite the progress, challenges in the agricultural sector are still remaining. कौन से challenges? Yes, here you can see the challenges. जैसे कि yes, here it is mentioned. One of the major hurdle is currently which India is facing, India's agriculture sector is facing, is climate change. And this has affected crop yields and food production. Farmer students are also facing problems like poor soil quality, lack of access to technology, and insufficient irrigation infrastructure. और भी कई सारे challenges है, जैसे हम देख रहे हैं कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. Okay, around 90% of groundwater utilization is done by agriculture sector in our country. And ऊपर से हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स है 82% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड दे होल्ड लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड विच इज स्मॉल, विच इज क्वाइट स्मॉल. तो इससे उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है. अब आप देखो यूएस के जो फार्मर्स है वहाँ पर जो है वो दे आर रिच. वाई? क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है. ओके, तो they are not just growing food for their sustenance, they are basically doing commercial farming, जो कि इंडिया के फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट केपेबल ऑफ, क्योंकि वो सस्टेनेंस के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. और साथ ही साथ ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो अलग हैं. और there are also growing concerns about pesticide overuse, which not only harms the environment but it also reduces the long term fertility of the land. और एक और जो चैलेंज है एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ा वो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके, food availability for non-agricultural household. Even though India produces students a lot of food, getting it those to who need it most remains a significant problem. और इश्यूज क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कुछ लोगों को? क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड वेस्टेज, इनइक्वालिटीज इन एक्सेस, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल दे आर अंडर नरिश्ड एज ऑफ नाउ, राइट? और कुछ एक तो ये भी देखने को हमें मिल रहा है कि जो केपेबल है उनके फूड डाइट भी अभी प्रॉपर नहीं है, राइट? सो दीज आर द challenges which agricultural sector is facing. Now what's the solution? Now this is where collective responsibility comes in. Okay, collective responsibility. It's not just about farmers growing food or governments creating policy. It's about everyone coming together, right? So policymakers need to ensure sustainable agricultural practices and food distribution networks is working in tandem, and it is working smoothly. Farmers must be equipped with knowledge and resources to adopt climate resilient farming methods. क्लाइमेट रेजिलियंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग मेथड्स फार्मर्स को बताना चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए. एंड as consumers, we have to make mindful choices that support sustainability, like reducing food waste and advocating for fair agricultural practices. I've seen some children, they are eating in marriage, and they are hugely, they are wasting food everywhere, they're wasting food. आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कभी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो,
एंड वहाँ पर आप उतना ही कंज्यूम करो जितना आपको रिक्वायर्ड है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अवे फूड। आप उतना ही अपने प्लेट में रखिए जितना हमें खाना है, right? So these are some of the mindful choices that, and through these choices we are actually contributing towards environmental sustainability. And there's also the responsibility of companies, of course, to step up and avoid practices like greenwashing, as we talked about earlier, right? And because misleading claims don't just harm the environment, they also undermine efforts to ensure food security, right? So, to wrap things up, we have discussed two significant issues. First one was greenwashing and India's food security journey. Both these topics, students, it highlight the importance of transparency, sustainability, and collective responsibility. Whether it's in business or agriculture, real progress comes when we work together towards genuine solution. Thanks for tuning in today, students. That's all, and don't forget to like, subscribe, and share.